book. The chapter's name is Changing Families. This is chapter number 9. Okay, so let's start. Here are some pictures of families. These are the families of Nimmi, Sharing and Nazli. यहाँ पे कुछ families की pictures आपको given है और ये है निम्मी, शेयरिंग और नेज़ली की family की pictures. Let us look at these pictures, talk about what we see and discuss. आइए इन pictures को देखते हैं और इनके बारे में we will discuss further. Alright. So the first few pictures are the pictures of Nimmi's family. Okay. A new arrival. एक new arrival, एक नए मेहमान का आना, एक नए इंसान का आना. Okay. There is great excitement in Nimmi's family. She has a new baby sister. आज निम्मी की फैमिली में क्या है? बहुत ज़्यादा excitement है, खुशी है, because she has a new baby sister. उसके घर में कौन आया? एक new baby sister आई. Okay. So in the first picture we can see that Nimmi's family here are waiting for the birth of her baby sister. निम्मी की फैमिली जो है वो फर्स्ट पिक्चर में हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रहे हैं फॉर द बर्थ ऑफ न्यू बेबी सिस्टर. अच्छा, हाउ डू वी नो कि ये एक हॉस्पिटल है? यू कैन सी दिस प्लस साइन हियर, द रेड प्लस साइन. दिस इज द सिंबल ऑफ अ हॉस्पिटल. ओके. So Nimmi's family is waiting outside a hospital for the arrival or for the birth of her baby sister. This is Nimmi's father, Nimmi's grandmother, and Nimmi herself. All right. So in the second picture we can see that Nimmi's baby sister has been born. यहाँ पे निम्मी की छोटी बेबी सिस्टर आ गई फैमिली में. And she is Nimmi's mother. ये निम्मी की mother है. And the family is very happy by seeing the baby sister. Okay. So let's move on. In the fourth picture we can see that Nimmi's family is coming out of the hospital. अभी निम्मी की family निम्मी की baby sister को लेके hospital से बाहर आ रहे हैं. And they are heading back to their home. अभी ये लोग कहाँ वापस जा रहे हैं? अपने घर वापस जा रहे हैं. And in the fourth picture the family has reached home. Fourth picture में family कहाँ पहुँच गई? Home, where Nimmi is welcoming her baby sister. अभी निम्मी भाग के आई and she is welcoming her baby sister. अच्छा, we can see two more people in this picture. One is the auto rickshaw driver, which is not a part of this family. ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है वो इस फैमिली के मेंबर नहीं है, but here we can see Nimmi's uncle. Okay, so this is Nimmi's uncle, and Nimmi's uncle is wearing black glasses and he has a white stick with him. Why so? Because Nimmi's uncle is not able to see, or he is blind, he cannot see. That's why he carry a white stick with him all the time and he wears black glasses. Okay, so this is Nimmi's family. Now you will have to answer the following questions. So first one is, who were the members of Nimmi's family before the arrival of her baby sister? निम्मी की बेबी सिस्टर के आने से पहले उसकी फैमिली में कौन कौन मेंबर्स थे? So the answer would be Nimmi, Nimmi's mother, Nimmi's father, Nimmi's grandmother, and Nimmi's uncle were the members of Nimmi's family before the arrival of her baby sister. Alright. And second question is, how many members are there in Nimmi's family now? So you'll have to count the family members of Nimmi. First one is Nimmi's dadi, second is Nimmi's father, third is Nimmi's mother, fourth is Nimmi herself, fifth is Nimmi's uncle, and sixth is the new baby sister. So Nimmi's family has 6 members now. Okay, let's move on.
How do you think the lives of Nimmy's family members have changed after the arrival of the new baby? For example, how will Nimmy spend her day now? So what do you think? आपको क्या लगता है कि न्यू बेबी के आ जाने के बाद निम्मी की फैमिली मेंबर्स की लाइव्स में क्या क्या चेंजेस आ गए होंगे? फॉर एग्जाम्पल, हाउ विल निम्मी स्पेंड हर डे नाउ? अभी निम्मी अपना डे कैसे स्पेंड करेगी? So Nimmi will be taking care of her baby sister. Nimmi अपनी baby sister का ख्याल रखेगी and also Nimmi will play with her baby sister all day long. Nimmi सारा दिन अपनी baby sister के साथ खेलेगी. Okay. Second is, what new work will her mother do now? अभी निम्मी की मम्मा कौन सा नया काम करेंगी? So Nimmy's mother will feed the baby sister. निम्मी की mother baby sister को खाना खिलाएंगी. She will clean the baby sister. She will take care of the baby sister. निम्मी की mother baby sister का ध्यान रखेंगी. Okay. Third is, there will be a change in the daily work of Nimmy's father, grandmother and uncle with the arrival of new baby. Can you tell how? क्या निम्मी के फादर, ग्रैंड मदर और अंकल की लाइफ में कोई चेंजेस आएंगे? उनके डेली वर्क में कोई चेंजेस आएंगे आफ्टर द अराइवल ऑफ द बेबी सिस्टर? Yes, they all will have to take care of the baby sister, as we know that little babies need extra care. So they all will be helping her mother, yes, in taking care of the baby sister. Okay, let's move on. Okay, these are some questions you will have to answer on your own. So first one is, has a small brother or sister been born in your home or in any house in your neighborhood? क्या आपके घर में या फिर आपके पड़ोस में कोई छोटा बेबी ब्रदर या फिर बेबी सिस्टर पैदा हुए हैं? If yes, then write yes. If no, then you will have to write no. Okay. So, how does it feel to have a new baby at home? It feels very good to have a new baby at your home. आपके घर पे नए बेबी के आने पे आपको कैसा फील होता है? तो अच्छा फील होता है. How have things changed at home with the new baby? नए बेबी के आने के बाद घर में चीजें कैसे बदल गई हैं? Now we have to take good care of the baby all day long and we have to look after the baby all day long. Okay, तो अब हमें सारा दिन बेबी को क्या करना पड़ता है? बेबी का ध्यान रखना पड़ता है और बेबी को देखना पड़ता है. You know ना, you cannot leave a little baby alone at any time. So you have to look after the baby all the times. Okay. Third one is, find out all about the youngest child in your home or in the home of a relative and then write. आपको क्या करना है? You have to find a young baby in your neighbor, in your home or in the home of a relative. आपको किसी रिश्तेदार के घर पे या खुद के घर पे सबसे छोटे बच्चे के बारे में फाइंड आउट करना है और फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं. ओके. फर्स्ट वन इज, व्हेन वाज द बेबी बॉर्न? बेबी कब पैदा हुआ? तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि बेबी कब पैदा हुआ. फॉर एग्जाम्पल, इफ द बेबी वॉज बॉर्न इन 22nd of October 2019, तो यहाँ पे आप लिखोगे 22nd of October 2019. ठीक है. यहाँ पे आप उसकी डेट ऑफ बर्थ, बेबी की डेट ऑफ बर्थ राइट करोगे. ऑल राइट. सेकेंड इज द बेबी अ बॉय और अ गर्ल? बेबी एक बॉय है और अ गर्ल है. So you will write here if it's a baby or a girl, it's a boy or a girl. Okay. For example, if the baby in my home is a girl, then I will write the baby is a girl. How are you related to him or her? आप उससे कैसे related हो बेबी से? For example, if the baby is your brother or your sister, then you will write baby is my sister or my brother or my nephew or my neighbor. So आप जैसे भी बेबी से रिलेटेड हो आप यहाँ पे राइट करोगे. ओके.
fourth one is, where was the baby born? Baby कहाँ पे पैदा हुआ? So mostly the babies are born in the hospital. So you will write, the baby was born in a hospital. Okay. Next is, who does the baby look like? Baby किसके जैसा दिखता है? So mostly the babies look like the mother or father or sister. So you will have to look at that and you will write the answer. For example, I will write, the baby looks like his mother. Baby अपनी मम्मा के जैसा दिखता है. What is the color of his or her hair? Baby के hairs किस color के हैं? So if the baby has any hair on his head, then you will write, the baby has hairs of black color or whatsoever color. What is the color of his or her eyes? Baby की eyes का कौन सा color है? The color of baby's eyes is black, blue, brown. जो भी color है आप वो write करोगे. Okay. Does the baby have any teeth? क्या baby के कोई दांत भी हैं? Yes or no, you will write on your own. What do you feed the baby with? आप baby को क्या खिलाते हैं? तो you will write, we feed porridge to the baby. Babies को हम लोग क्या खिलाते हैं? Porridge खिलाते हैं, baby food खिलाते हैं और milk खिलाते हैं. तो we feed the baby with milk, porridge and baby food. Okay. What is the baby's length? Baby की लंबाई. Baby कितना लंबा है, कितना बड़ा है? So you will write, the baby is 2 feet long. Mostly the babies are very tiny. So you will write, the baby is 2 feet long. Okay. How many hours a day does the baby sleep? Baby दिन में कितने घंटे सोता है? The baby sleeps for 12 to 14 hours a day. Baby दिन में 12 से 14 घंटे यानी 12 to 14 hours तक सोता है. Okay? क्योंकि babies जो है वो बहुत ज़्यादा सोते हैं. You all know that, right? Okay. What different sounds does the baby make? Baby कौन कौन सी अलग अलग आवाजें निकालता है? The baby makes various sounds of crying, laughing, meh, pepe, chi, choo, choo. You can write anything you hear. ठीक है? हर एक baby different sounds produce करते हैं. अलग अलग babies अलग अलग sounds निकालते हैं. So you will be writing different sounds that a baby makes. ठीक है? Next is, who does the baby stay with most of the time? Most of the time सबसे ज़्यादा baby किसके साथ रहता है? किसके साथ रहता है? The baby stays with his mother most of the time. एक baby सबसे ज़्यादा किसके साथ रहता है? अपनी मामा के साथ और अपने father के साथ. So the baby stays with his mother most of the time. ठीक है? Our next thing is, stick a photograph of the baby or draw a picture in your notebook. तो आप जिस बेबी के बारे में ये सब कुछ राइट कर रहे हो, उस बेबी की एक पिक्चर आपको अपनी नोटबुक में क्या करनी है? पेस्ट करनी है, चिपकानी है या फिर ड्रॉ करनी है. ओके. सो आप अभी इतना करिए. We will continue this chapter again in our next lecture. Okay. Have a good day to all of you.